Discuss building in some safeguards, assurances. What assurances, Lord Mountbatten? Why do you want to force reluctant partners into a marriage? Our customs, our food, we can't even drink out of the same glass. You don't yet understand why we want to create Pakistan. Both communities have suffered, Mr. Jinnah. Yes, they have. And they must be separated. Why didn't you accept it? Folly of the highest degree. You could have saved millions of lives, millions of homes. There would have been none of this misery. You think I took this decision lightly? Here I was being offered the prime ministership of the largest new free nation on earth, and I turned it down. Because it wouldn't work. You should have stayed in Simla. And in bed, you can't play fast and loose with bronchitis. Not even if a country is at stake. There will be no country without you, Jinnah Sahib. It's not bronchitis. No. It's consumption, isn't it? Yes. Leading to deterioration and death. Yes. Doctor, we must keep this between ourselves. Think of the potential consequences. I've never lied to him before, Doctor. And now I have to pretend that I don't know. You must get him to rest. Fatima, were you jealous of Rati? No. Of course I wasn't jealous of her. That pretty creature. So stunningly pretty and young. Young enough to be your daughter. But she didn't look after you, did she? She wasn't interested in the same things. And she could never look down the long road of your destiny. As I can. I'll race you back. You'll lose again. A great setting for the beginning of love. Yes, it was. And then love faded away? Mine never did. I can see that you'd run away from the gates of heaven to catch a last glimpse of her. Being neither Hindu nor Muslim, we Parsis can only benefit if the two main communities stop fighting. I agree, sir. And share their culture and their Indianness. Jinnah, dear boy, you are young and idealistic. The only solution is the closest contact, interracial marriage. Then the children will be neither Hindu nor Muslim, and these differences will fall away. So, Hindu-Muslim intermarriage would be beneficial? Most certainly. And what, sir, do you think of intermarriage between a Parsi girl and a Muslim man, if their status were compatible? Mr. Jinnah, how dare you, sir? You have abused my hospitality. I will remind you that my daughter is 16, a mere child. Sir, I deny any such intention.
I apologize for any offense I may have caused, and will immediately relieve you of the feeling that your generous hospitality has been abused. You may retire. I shall see you in the library after dinner. And you will never see that man again! Muslim, 24 years old, medically fit. Smear it to me. We'll take him anyway. We'll get that 5. Mr. President. Good morning, sir. I trust you are well. We have come to join the British Army. Mr. Jinnah, I warn you that any interruption here of recruitment will be seen as a riotous disturbance. No need for your threats, sir. As Indians, we simply demand that we be recruited to the King's service as fully commissioned officers. This form of exhibition will get you nowhere. If Indians are being asked to shed their blood for the Empire, then why can't we be given the dignity of joining the army at all levels? Or are we just cannon fodder? I declare the proceedings for today to be over. Your reply, sir. Mr. Jinnah! I'm 18 today. I've left home. Repeat the kalma after me. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad is his prophet. Our beloved daughter Ratan Bai, we welcome you to the faith of Islam. Now, do you accept this man, Muhammad Ali Jinnah, to be your lawful husband in the sight? I accept. I accept. I accept. Mr. and Mrs. Muhammad Ali Jinnah. Delighted, Mr. Jinnah, delighted. Mrs. Jinnah. And Mrs. Jinnah. I must confess, your reputation as Bombay's beauty is not exaggerated. Yes, indeed. You and Mr. Jinnah deserve to delight in it. Thank you. I'd rather be known as the strongest nationalist in Bombay. I thought we'd put politics behind us this evening, Mrs. Jinnah. We are so pleased you were able to join us. You live above us, don't you, Mr. Jinnah, atop the hill? Yes, with a view of the Arabian Sea. The same vast expanse we see from our Karachi house. Oh, how lucky. We've never been to Karachi. And the weather there, changeable? I was saying to Mrs. Jinnah, the weather in Bombay is quite changeable. Would you bring Mrs. Jinnah a shawl? We never think of heating the house.
must be feeling quite chilly, my dear. When Mrs. Jinnah feels the cold, she will ask for a wrap herself. Spare yourself the trouble. I won't stand in there, but let them go. How dare she dress like that at my table? In the game. I welcome the fact that Mr. Jinnah speaks of dignity. India has an ancient, unshakable dignity and an ancient spirit, a force of spiritual strength which has been suppressed for too long. But when it is released, this shining light of truth, of ahimsa, which is non-violence, and satyagraha, which is the ancient path of truth, no force on earth, no constitutional game will be able to suppress it. Fine speech, Jim. Thank you. Your Mr. Gandhi was very patronizing. As though you were the newcomer, and he'd worked to build the Congress Party, instead of the other way round. Oh, I don't care about that. There is something about what Mr. Gandhi says. Makes me a little uneasy. I wish you'd stay for a few more weeks, Fatima. My other brothers need me in Karachi, but I'll be back soon. I hope you haven't forgotten anything. I don't trust these servants. Oh, don't be silly. Ram has been looking after me ever since I was a little girl. Ram, please look after her. She's so young. Don't worry, Bibi Sahiba, don't worry. But when you will return from Karachi? As soon as I'm needed, Ram. Where are you going, Jin? Just for a stroll, my love. Do you want me to come? Good afternoon, young man. I hope you don't mind me resting for a few moments in your lovely garden. No, no. No, of course not, sir. Can I ask them to fetch some water? No, 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 I'm not unwell. It's just that the climb up the hill is a little tiring. You're most welcome. Thank you. Mr. Jinnah, you are right to trust logic. But isn't there some logic in Gandhi's non-violence? What do you mean? Who are you? Just a traveler. Gandhi angers you because he patronizes you? No, no. No, I'm not a child. Mr. Gandhi is an extraordinary man, a man who believes in his own mission, but the clothes, this imitation of the Hindu peasants, the spinning wheels, the fasts, the bits and pieces of Sanskrit philosophy, ahimsa, satyagraha, he is calling forth a flood. Isn't that what the movement needs? Millions of people demanding that the British leave India. Yes. Will it stop there? What else will they demand? When you talk of spirit, you release darker forces.
Powers that can't be questioned, illogical urges and anger. If they succeed in kicking out the British because they have usurped power in India, won't their attention then turn to the Muslims? After all, we Muslims conquered India long before the British. Isn't that logical, too? No. Because we are not outsiders. We are part of this country. And besides, we have no England to go back to. Jin? Talking to yourself, Jin. I'm just rehearsing a speech. Perhaps I should ask for a postponement of the trial. Jin, I don't want you to take this amiss, but I'd like to discuss something personal with you. Kanji, I have 3 cases pending in the High Court. Can't it wait? Here. Jin, stop them! They're beating helpless people! They offer themselves to be beaten. Count is politics. They're breaking their heads! There is nothing I can do. They want this tamasha, this theater. You can't just stand there and watch. Kanji, come on. Rati, get the child home! By whose authority are you using force? Can I see the magistrate's order? My advice, Mr. Jinnah, is to go back. Stop this slaughter. No! Pull the men back. Withdraw lathi charge! In this great battle for our freedom, let it not be said of us that we are guilty of shedding blood, but let it be said that we suffered, that we shed not somebody's blood, but our own. So, I put this resolution to Congress. We pledge ourselves to secure complete independence for India through means of non-violence. Members of Congress, I beg to oppose this hasty resolution. No one's desire for independence is greater than mine.
Yet I wish to point out that these methods, this dragging in of religious symbols, these radical marches and provocation are now beginning to split the movement. The method and goal proposed by Mr. Gandhi's No! No! Mahatma Gandhi! Say Mahatma Gandhi! Mahatma Gandhi! In Mr. Gandhi's resolution, at this moment, the destiny of our country is in the hands of two men, and one of them is Gandhi. Therefore, standing on this platform, I appeal to him to pause, to cry halt. Before it is too late. Mr. Jinnah is right. Do not bring religion into politics. We are all Indians. If we go down this road, we will turn Hindu against Muslim in the end. We will not win our freedom together. We will turn brother against brother. The turning point? I left the Congress Party. If Congress was going to turn into a Hindu party, then somebody had to speak up for the Muslims. Why are you dressed like that? Jane, you are so late. We're late. The party started at 8 o'clock. Party? The party at Lady Gigi Boy's. Oh. So you said you'd take me. Of course. That party. Well, I have to start for Delhi on the 10 o'clock train. You go by yourself. Again. Bertie, I have a practice to run. I don't want to go dancing with the baronet. No dancing. Been drinking? Gin. How dare you? Why are you cross with Mummy? It's all right, darling. Come and sit down. I'm not cross with Mummy. Did Mummy give you a kiss goodnight? No, silly. Mummy never puts me to bed. Anita puts me to bed. Anita, take her back to her room. I have to go, sweetheart. You're always going away. No, I'm sorry. Go to bed. That's a good girl. Hello? Dr. Patel, please. Patel? Jinnah, can you come immediately? Thank you. Sir, Kanji Sahab is here, sir. Kanji, thank God. Ready to go? Kanji, I found these. Where is she? She's asleep. I called. Kanji, you knew about this. Why didn't you tell me? She didn't want you to know. She has cancer. It's eating up her insides. That's why they prescribed the morphine. God. Ask what is in your heart. I can't. It's too private.
Go on, dear. We can't keep waiting. Rutty. What are they doing? Will my Jinnah get married again? When I die? No, Rutty, no, never. The pretty dear wants to know if her husband still loves her, like he used to. Kanji, please do something before Mr. Jinnah comes back. The glass was right. I did not love her as before. I loved her and I needed her much more. But I never taught myself to show that love. If we win here in Delhi, the government will be forced to publish casualty figures for Indians killed in battle. I shall demand that the compensation paid for Indian widows is the same as they pay for Tommies. Sir, long distance call from Bombay. Thank you. Muhammad Ali Jinnah speaking. Yes? I see. I'll be on the next train. My wife is very ill. You will have to carry the case. You still cry for her? No, not for her. Then why? For love that is irretrievable. So much love. And it all melts away. Mr. Birdwhistle has been accused of subversive publication.
By subversive, they mean in favor of Indian independence. He has also been forcibly removed from India. My lord, either Mr. Birtwistle is a citizen of Britain and subject of the King Emperor, or he is not. And either India is part of the British Empire, or it is not. And the King Emperor is its king and emperor, or he is not. And I would remind the court that it is treason to pronounce that he is not. Mr. Birtwistle, are you a citizen of Britain and subject of the King Emperor? Indeed I am. And were you so 1 month ago? Yes, I was. And were you instructed to leave India? Yes. By whom? By the office of the Secretary of State for India. My lord. No resident of Bournemouth, shall we say, may be told that he is to repair to Scotland and Scotland alone. Since Magna Carta, the right to free movement throughout the realm has been established. So it has. My client has been denied that right in that part of this realm known as India. Tell me, Mr. Jinnah, in another place, I have heard you argue that India is not part of this empire. That is as it may be, my lord. However, I am not in that place now, and am conscious of my humble role of advocacy in this your court. Mr. Birtwistle, you are a fortunate man. Jinnah Sahab, the Muslims of India need your leadership. Iqbal Sahab, I am flattered by the compliment from you, our great poet and philosopher. There are many who can provide that leadership. No, Jinnah. We need a Muslim of the modern age. Such a man has to lead the struggle for Pakistan and then be an inspiration to a country at its birth. How can I even dare think of myself as such a man? There is no other. For 200 years, the Muslims of India have lost the directions of their destiny. And now, as the mists clear, a vision is born of a country of purity and compassion. A Pakistan. Dr. Iqbal, please. Jinnah Sahab, it's my turn to say please. I know I haven't long to live. Go back to India and take charge of the League, please. Go back to India and carve out a country. How? Where to start? Jin, my God, why didn't you write or wire? I know. I'm sorry to intrude. Serious problem? Just polishing his teeth. Sir, I beg your indulgence. Would you mind coming back tomorrow? We have urgent business. What are you saying? I have paid. Please. I'm so sorry. See, there's one thing that's been bothering me. I've spoken to Aunt Masiji. How to say this? Oh, you're the lawyer? I wanted to contact decent families with boys. You understand? Men of about your age. Suitable men. As head of the family, You're going to matchmake for me? That's so sweet. For your happiness. I resolved to give that up long ago. The marriage, love, children.
I want to be there when we win. Fatih, forgive me. I know you think I'm very modern. You're as old-fashioned as they come. has put Pakistan within our grasp. The Muslim League has proved, in the eyes of the world, our right to represent the Muslims of India, a nation which has found its identity and has today declared its will. Jinnah Sahab, men must also be judged by the love they have shown. Apart from Rati, who would you say you love the most? My sister, Fatima. My daughter, Dina. And you think you treated them as well as you could? Morning, my dear. Papa, I must speak to you. Of course. Sit down. Papa, I want your permission to marry. Marry? But you are far too young. Who? Never. Mr. Wadia? But he's a Parsi. Yes. Dina, there are millions of young Muslim boys in India. You can't do this to me. There were millions of Muslim girls. And you married Mama. She was a Parsi. She became a Muslim. Is Mr. Wadia prepared to embrace our faith? No. But I will marry him. Dina, if you do this, you cannot call yourself my daughter anymore. I forbid it. But why? Because it is against our customs, against our tradition. I have fought for a Muslim state and my outside the faith. I am that the girls from our community have qualified in law, in the sciences, in English and Urdu, Sanskrit, and even in Chinese. Excellent. The graduates from the Muslim College will no doubt go on to enrich the lives of both Pakistan and India.
Lady Mountbatten. It gives me great pleasure to give the Ratanbai Modi Award for Distinction in History to Farida Shah. Miss Jinnah, why have you invited an Englishwoman to be our guest when they have only contempt for us? Why should we have to shake the hand of the enemy? If you object to my presence, I will willingly. No, Lady Mountbatten. My younger sister, this is not the way we Muslims have chosen to fight for our independence. The British are our friends and our rulers. We don't want them to be our rulers, but we want them to remain our friends. Now, sister, come and take your prize. Panditji, it is dangerous. There are demonstrations against our party by Pathan tribesmen. Sahib, I'll speak to them, don't worry. Muslim League members. Stop the car, I want to talk to them. I said stop! My friends and comrades, my fellow citizens of India, throughout my tour of the northwest frontier, I have been dismayed and saddened by the demonstrations of violence and opposition directed against the Congress party in this great province. Congress is a party with no religious boundaries. It is for Muslims, Hindus, Sikhs, Christians, without distinction of caste or creed. My dear fellow, I'm so sorry. Why on earth were you giving speeches in the front here? I thought Edwin had specifically told you not to go. Dickie, I thank you for your concern, my friend. Does Edwina know about the incident? Of course. Nothing stays secret in India. Well, let me tell you both that I will never accept that we in Congress can't represent the Muslims. And one stone won't stop me. My dear Jawahar, this is not one stone. It's an avalanche. This election is disastrous for your Congress party. The Muslim League has won the Punjab. It's won Bengal. It's won the frontier. What did you expect? They have a majority in those provinces. Yes, who've given their votes to Mr. Jinnah. And now he'll demand that with these provinces, he has the basis for Pakistan. He can break away. Oh, Dickie, this is dangerous nonsense. Those provinces have minorities of Sikhs and Hindus, millions of them. So? They will never be safe in Pakistan. That, my dear Jawahar, is precisely what Mr. Jinnah says about the Muslims in India under your party's rule. Yes, I know, but don't you see, there are Hindu fanatics in our own party. And with all this talk of a Muslim Pakistan, they are beginning to demand a Hindu India. If they split the Congress, the Muslim League will be the strongest party in India. Unless I give Jinnah his Pakistan and split the country first. My friends, this is a historic day. The Viceroy, Lord Mountbatten, has conveyed to me the decision of the British government to concede to us the creation of the state of Pakistan. A partition commission is being set up under Sir Cyril Radcliffe with 3 Muslim judges and 3 Hindus to mark out the borders of Pakistan. Pakistan!
No! I am nobody's emperor. I am a soldier in the service of the birthright of Pakistan. Who are you? And why do you want to kill me? You're a traitor, Jinnah! If there is to be a Pakistan, it must be a Muslim state! Pakistan will be a Muslim state. Yes, but with you as leader, you speak of the rights of Christians, of Hindus, you talk of the rights of women. You are an ignorant fool. I have fought for your mother, your sister, and your children's children to live in dignity. Islam doesn't need fanatics like you. Islam needs men of vision who will build the country. Now grow up and serve Pakistan. Thank you, Nadine. Now, that's one thing Indians are not good at. I only meant baking cakes. I must teach the cook. Lady Wavell absolutely spoiled him. Jawahar, we're moving ahead. It's within shooting distance, independence. Dickey should insist on Gandhiji's proposal and offer him again the prime ministership of a united India. Don't start wavering now. You must be Prime Minister of India, and giving away Pakistan is the only way. Which you're discussing? The impossibility of Indians baking proper English cakes. Cake needs the right ingredients. That's not what's depressing, Jawahar. Come on, old boy. Jinnah can have his truncated little country. He'll come limping back to you in a matter of months. Jinnah will beg for reunification. And then it'll be up to you, Jawahar, to be magnanimous. I'll see to it. Then you still don't know him. He'll beg for nothing. My dear Jawahar. The anniversary of my victory in Burma falls in August. Wouldn't it be a great triumph if it coincided with the date of the independence of India and Pakistan? You mean delay the transfer of power by 4 months? No. I mean bring it forward by 8 months. India will gain her independence on the 15th of August, 1947. Pakistan would have to scramble to get itself ready. Mountbatten changed the date to force Pakistan into failure. He would want us to have our own army. But when the Muslims threatened to mutiny, he backed down. Ah. So you are not beyond manipulating a little bit of blackmail? I wouldn't put it like that. Let us just say persuasion.
you say to Dickie? I'll say I was with you, talking. He wants us to be close. I feel that too, but why? Well, if there's one person in the world who can explain something so difficult for me. Really? An Anglo-German aristocrat? Even that. There's the deep answer and the shallow answer. Oh, give me the shallow one first. And you won't mind if it's indelicate. Guide's honor. After being married for 20 or more years, Dickie doesn't want you anymore in that compelling way. And the deep reason? It's because he understands that friendship is rare and that we have found it. And he wants to be a part of it. He wants it to be the three of us. And he's willing to... This is difficult. It's not a sharing. No, you're right. He has the deepest admiration for you. You see, you have more than he ever had. Oh, he has power, but you have the love of millions, and he wants to feel that there's something very strong, something very deep between you and him, too. And he can never bring himself to say it. I know. He's an Englishman. And the only way he knows is to lend me to you. I understand. Too well, perhaps. Jawahar, can I ask you one small thing? Anything, my dear. I know it's the one thing he wants, but he's too proud to ask. What, Dickie? Proud? We know he's Viceroy because he's the best man on earth for the job. But for him, the doubt still remains that he's the king's cousin, and that's why he got the job. But if Congress were to invite him... Were to invite him to become India's Governor-General? I think it would be a great honor for us. And it would please Bapu, I know. But, Edwina, there is one thing I want you to promise me. I promise. There are difficult times ahead. I want to make a pact with you to keep what is between you and me free from any matters of politics. I'll never ask the Prime Minister of India for anything. I feel what's between you and me is spiritual. Its feet shall not touch the earth. Excuse me, sir. There is a matter to discuss. What are these? Letters from Lady Mountbatten to Nehru and from him to her. Shameful things. More shameful for us to read them. We don't read them, sir. It was suggested we use them. We do not descend to this level. The shame is not theirs, it is ours. Destroy them. They are carving up our country, savaging our people. I am sorry, sir. I am sorry. I, too, am sorry for the thought that blackened your generous mind. Well, Jinnah Sahib, a bit prudish of you. You could have changed the whole course of history with those letters. Are you trying to play Satan with me? Did I hear you say that I should use blackmail against my political opponents? It would have saved lives. History is
by the will and the wants of millions of people, not by some letters and blackmail. Lord Mountbatten, I can't say I didn't anticipate that question. It's quite clear to me that one man cannot possibly be the head of state of both nations. It would be a great symbol of friendship between the two countries. If we were at war, Lord Mountbatten, you couldn't possibly order one side to attack and the other to defend. I see. Whose name do you think the Crown will approve, then? The Muslim League has asked me to submit my own. Do you realize, Mr. Jenner, this will cost you dear? A few crores of rupees, perhaps, from the Exchequer, or a division of the spoils. No, Mr. Jenner. It will cost you the future of Pakistan. Everything. You won't have a wooden table or chair in an office in your Pakistan. Or the money to buy an olive green army water bottle. I left something behind me of great value when I was forced to leave my city. Oh, Jinnah Sahib, the sacrifice of a large house, what is it compared to the death of millions for your Pakistan? I was not referring to my house. I was referring to my daughter. Papa, we've come to say goodbye. I'm sorry you're not coming with us to Pakistan, but I understand. I will visit you, Papa. But my home is now in Bombay, with my husband and my child. Bibi Sarah, Jinnah Sahib has come back. Bring some tea. The refugees are pouring into Pakistan. There are stories of massacres. Well, we'll send our army in to help them. You haven't any army. They've given Firozpur to India. It's final. But that is Muslim territory. And our major arsenal. It's Mountbatten, with Nero whispering in his wife's ear. I'm glad you could spare me these moments before you go, Miss Jenner. I will see you in Karachi, won't I? You must be my guest, Your Excellency. Oh, do call me Edwina. Edwina, I invite you formally on behalf of the government, and informally, to sneak in whenever you wish. But your heart is really in Hindustan, isn't it? Why do you say that? Because I think we should start by being honest with each other. That's very welcome. So, what do you mean by Hindustan being nearer my heart? Your friends. Your particular friendship with... His name is Jawaharlal Nehru. Yes, Nehru. It goes very far, doesn't it? Your friendship with him. And he is a friend of your husband. People have been talking, but people do talk. Do you know what they say about you? Me? There's nothing to talk about. On the contrary, they say that you and your brother are obsessive. That you're obsessed with this
Pakistan. Yes. And that is the ideal that holds us together. Could you accept as a friend someone who didn't share that ideal, who didn't believe in Pakistan? No. I thought you might say that. But I want you to know, Fatima, that if there can be a one-sided friendship, I consider myself your friend. Liaquat, I am appointing you first Prime Minister. I will announce it in the Assembly tomorrow. As for remuneration, my salary as Governor General will be 1 rupee a month. We must be the first to set an example. Are you feeling all right, sir? To make this great state of Pakistan happy and prosperous, we must concentrate wholly and solely on the well-being of the people. You are free to go to your mosques, free to go to your temples, or to any other place of worship in the state of Pakistan. My guiding principle will be justice and fair play, without any prejudice or ill will, without any partiality or favoritism. We must root out the poison of corruption and nepotism. Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. Each family will be given a grant and some accommodation, sir. Something is wrong, sir. Open the doors. Ya Allah. No, sir, no. It's not for you, sir.
Sahib, what would have happened if you had not created Pakistan? I don't know. I had my fears. Look what happened to the Jews in Germany. And to minorities all over the world. India, please. Tensions had reached a high point around Babri Masjid, the mosque in the northern Indian city of Ayodhya. Spurred on by powerful Hindu politicians, a mob mentality would take over. A few would become scores, then hundreds and thousands. Tired of their leaders temporizing, fired by religious zeal, they attacked. At the end of the assault, only rubble would be left of the Is this the end result of Hindu fanaticism? These are the people I outlawed when I was Prime Minister of India. I dislike them as much as you. Fortunately, they still remain a minority. You realize, of course, that these are the people who killed me. And you know why, Qaid-e-Azam? They accused me of giving way to Pakistan. I always thought that one day British Raj would become Ram Raj. Some of them have come thousands of miles. I don't know what we can do to help them. Assalamualaikum, Mohtarma. How do you do, Lady Mountbatten? How do you do? I am the social worker in charge of this camp. Mohtarma, the conditions here are appalling. There are no tents. The officials are not at all cooperative. She's saying that she's lost her son and that her husband has died. And is this what they left their homeland for? Madam, you gave me an award at Ahmedabad University. Lady Mountbatten was there. Yes, I remember you clearly. They've taken my sister, my little sister. She's gone. There are hundreds like her sister on both sides, kidnapped, raped, and kept as slaves, too ashamed to identify themselves or to run away. And their families wouldn't accept them back if they'd been raped? Would you accept your daughter under the same circumstances? Of course. Why don't you sit down? I'll just get you some tea. But what can we do? I'll do what I can here. Meanwhile, on the other side, use your influence with Nero. Get him to send troops to stop the slaughter and kidnapping. But Fatima, he's no longer just a friend. He's Prime Minister of India. And for all sorts of reasons, I can't. I shouldn't. I'll talk to him. Mountbatten has promised us complete army support. And yet, all British officers are confined to barracks. Sir, the Maharaja of Kashmir has signed the state over to India. That's impossible. Kashmir is a Muslim state. Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Sir, we have reports that the Indian army is already in Kashmir. And they are being personally directed by Mountbatten. Sir, Lord Mountbatten has deceived us. And he still pretends to be our friend. He is due here tomorrow on a state visit, and I'll snub him. We must learn to rise above these differences, Liaquat. He is our guest. So, Jinnah Sahib, your story is that most of the blame lies with the Mountbattens. Only as much as they are guilty of. Of course, you don't know what happened to Mountbatten. No. For a while, it was rumored that he was a Soviet spy. In the end, he became a symbolic target for the Irish Republican Army. Hello.
May I open for the prosecution? Your case, Jinnah Sahib. Lord Mountbatten stands accused of being, from the first, an enemy of Pakistan. Guilty or not guilty? I created the wretched country. I submit 5 pieces of evidence. 1. Lord Mountbatten advanced the date of partition by 8 months, hoping that the new country would be like a regiment of soldiers parachuted into enemy territory without maps. Secondly, Lord Mountbatten interfered in the division of land between India and Pakistan, giving the whole military arsenal at Firozpur to India after it had been allocated to Pakistan. I now call Sir Cyril Radcliffe, who drew up the boundary and was then forced to change it. Sir Cyril, did the Radcliffe Commission award Firozpur to Pakistan? Yes, it did, at first. Why? Because it was a Muslim-majority district. Sir Cyril, did Lord Mountbatten issue any orders to you? Oh, yes, he gave me a verbal order. You see, the border near Firozpur became a curve, and I was instructed to make it a straight line. Thus transferring hundreds of thousands of people from one country to another, and leaving Pakistan without one major army arsenal. That is correct. Thank you, Sir Cyril. And lastly, this mess over Kashmir. My lord, there was no mess over Kashmir. Even I know that there have been 3 wars fought over Kashmir since you left it the way you did. The mess was not of my making. Mr. Jinnah hates to lose. He signed a document allowing the Maharaja of Kashmir to choose either India or Pakistan. He chose India. Now he cries foul. My lord, I did sign. And the Maharaja of Kashmir, being a Hindu, with a population 80% Muslim, should have signed to Pakistan. My lord, I am guilty. Guilty of trusting Lord Mountbatten and the British Army officers who came to command my army at my request. My lord, I call General Gracie. General Gracie, you were the army commander in Pakistan. Yes. Did you receive intelligence that Indian regiments under Lord Mountbatten's command had been airlifted into Kashmir? Yes. Were you ordered by the government of Pakistan, as its army commander, to resist that invasion? Yes, I was. And did you resist it? No, I... Perhaps you would be good enough to explain to the court. I am a British officer. The Indian side was led by British officers. I wasn't going into a war with other officers commissioned by the king. I refused. But General Gracie, that is mutiny. Well, mutiny is a rather large word for a country like Pakistan to use. Thank you, General Gracie. That will be all. And now, a question to Lord Mountbatten himself. Why did you not stop the slaughter? Why did you not send in your troops? As I've said to you before, Mr. Jinnah, British troops could not get involved in your squabbles. Britain had to withdraw, with honor. After 200 years of looting, exploitation, and colonial theft, I suppose there is honor among thieves. My lord, I rest my case. Jinnah Sahib, one last question.
Mind you, I ask all of them this. If you had your time again, would you do the same thing? Yes. But I would want others to behave differently. And if you were to ask one person forgiveness, just one, who would you choose? The time is past. Perhaps it still can be arranged. What's your name? Zakiya, Where are you from? Firozpur, And where are you going? to Pakistan. That's a brave girl. Pakistan was made for you. You're safe now. Will my mother meet me in Pakistan? I'm sorry, sir. She's distracted. She lost her mother. It has been very hard. Abba Jan, maybe the old man has seen Amma. Do you know who he is? This is the Qaid-e-Azam. I'm sorry, sir. We beg your forgiveness for her not recognizing you, but she's only a child. It is I who should ask you for forgiveness for any part I have had in what has happened to you. No, sir, no. I bless you with all my heart. Allah blesses you. Pakistan, Zindabad. Pakistan, Zindabad. Pakistan! Zindabad! Qaid-e-Azam! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Qaid-e-Azam! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Qaid-e-Azam! Zindabad! Pakistan! Zindabad!
फिर से ख्वाब टूट गया। ये भी फिर टूट गया। अभी तो नया लगाया था ना। कभी तो गुड डिसीजन ले लिया करो। सैनिटरी फिटिंग्स का बैड डिसीजन और आपस की टेंशन से बचो। सिर्फ मास्टर सैनिटरी फिटिंग्स ही लगवाओ। वाओ, कितना खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये टूटेगा नहीं। अच्छा, तो फिर पूरे घर में मास्टर सैनिटरी ही लगवा कर दो। इतना खर्चा? खर्चा नहीं, सस्ता। मास्टर की सिल्वर सीरीज, जबरदस्त डिजाइन्स और मास्टर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेहतरीन क्वालिटी जो हर एक के बजट में फिट आए। अब तो खुश होना मेरे गुड डिसीजन से। पूरे घर में मास्टर सैनिटरी ही लग गया है। ओह हेलो, ये मेरा गुड डिसीजन था। ओह सुनो, अब तुम्हारा ख्वाब नहीं टूटेगा। मास्टर सैनिटरी, गुड डिसीजन। डार्लिंग, ये है ब्यूटीफुल एरिज़ोना सनराइज ऑरेंज। इसकी माइलेज क्या है? माइलेज ये कितनी दूर जाएगा, कितनी एक देर दिखाएगा, कितनी चांद रातें, कितनी बरसातें, कब होगा सनराइज ऑरेंज का सनसेट। ये है किफायती ड्यूलक्स प्रॉमिस। आम पेंट के मुकाबले इसमें है क्रोमा ब्राइट टेक्नोलॉजी जो रखे आपकी दीवारें साल हर साल ब्राइट। क्यों डार्लिंग, माइलेज मिली ना? काश जिंदगी में हर चीज की इतनी ही माइलेज होती। ये है ड्यूलक्स का प्रॉमिस, माइलेज वाला पेंट। उस्ताद जी, गाड़ी चल नहीं रही है, धक्के से स्टार्ट होती है। ये लगाइए। कह रहा था ये तो बेहतरीन है। पता है हमारी गाड़ी क्यों नहीं चलती? इसलिए कि हम हर सौदा आसानी से खरीद लेते हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। वो देखो, खरीद ले सौदा, खरीद ले सौदा, खरीद ले मंजन, खरीद ले सज्जन, खरीद ले बोतल बदल कर ढक्कन, खरीद ले चूरन, खरीद ले फौरन, खरीद ले हिकमत को फेंक दे, किस्मत खरीद ले जवानी, सुन ले कहानी, कचरा भी खरीद ले बेच रानी। अकल को बेच कर नकल, खरीद ले सौदा, खरीद। जिस दिन से हम सिर्फ एक नंबर चीज खरीदना शुरू हो जाएंगे, उस दिन से हमारी गाड़ी सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। हर बात पे इस तरह सर न हिलाओ। आला क्वालिटी की ओसाका बैटरी लगाओ और बेफिक्र गाड़ी चलाओ। It's fast, throbbing with energy. Define your style. Get on the road to your success. The world awaits to cheer you. Suzuki Cultus. New beginning, different attitude.
लोगों से सनब्लॉक ना इस्तेमाल करने का पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजीम कासर। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद। आज हम मौजूद हैं जुड़वा शहरों में और यहाँ पे जो है गोल्फ की एक बहुत बड़ी ग्राउंड नज़र आ रही है जहाँ पर के बहुत से लोग जो हैं वो गोल्फ खेलने के लिए तशरीफ़ आए हैं। हमारे साथ कर्नल असद महमूद मौजूद है। कर्नल साहब, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जो है आर्मी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है हम सब स्पिरिचुअल टीवी को देखते रहते हैं। इस इज़ अ वंडरफुल चैनल। और ना सिर्फ ये कि मैं समझता हूँ कि आप न्यूज़ और करंट अफेयर को बल्कि इस्लामिक सब्जेक्ट को भी मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा डील करते हैं। और आई वुड से कि ये बड़ा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज़ पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान कैसे किस तरीके से चल रहा है, हमने पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है, फिर इस वक्त जो सिचुएशन इस पूरे रीजन के अंदर आती है, तो मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि स्पिरिचुअल टीवी इसको बहुत बेहतर तरीके से कंप्रीहेंड करके फिर इसको आगे कवर करके लेके चलेगा। उसी के साथ आपने क्योंकि गोल्फ़ का तज़किरा किया और साथ ही रावलपिंडी गोल्फ़ क्लब का भी, तो मैं ये कहूँगा कि सर्टली दिस इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो कि अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पर मैसर है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। और मैं समझता हूँ कि आपका वो जो स्पिरिचुअल चैनल है ये आपका नहीं बल्कि हम सब का है, सब पाकिस्तानियों का है। इसको भी मैं कहूँगा कि स्पेशल अटेंशन ना सिर्फ ये कि आप गोल्फ़ को या और दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको दें, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो तमाम हमारे होनहार पाकिस्तानी जो कि दोज़ और आप कमिंग, आप उनके ऊपर फोकस करें और उनको आगे लेके आने की भी कोशिश करें। सर, मुल्क में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये हुकूमत को इसके ऊपर बड़ा फोकस करना होगा। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर और डिफरेंट किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर जाना होगा। आप चाहे मुख्तलिफ सेंटर्स बनाते हैं, कवर्ड होते हैं या फिर प्ले ग्राउंड्स बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों पे मेरा ख्याल है हुकूमत को फोकस करना होगा। फिर स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, फिर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इन सब को हिस्सा डालना होगा। और फिर आपकी हुकूमतें आती हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है कि मेजर रोल प्ले करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, मेरे मुल्क के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें? मेरा ख्याल है कि ये हमारा ठिकाना है, पाकिस्तान है, हम इसी की मिट्टी से निकले हैं, इसी मिट्टी के अंदर हमने जाना है। और जितना अरसा हम जिंदा हैं हमने पाकिस्तान के लिए जीना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। और हम हैं तो ये मुल्क है, ये मुल्क है तो हम हैं, हम सब एक मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर अपने यंगस्टर्स को कहूँगा,
इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट फॉर पाकिस्तानी यंगस्टर्स, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे बच्चियां हैं। आई वुड से कि दे आर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको बहुत आगे जाना है। एंड लेट मी टेल यू, इंटेलेक्ट के अंदर, जहानत के अंदर, विजडम के अंदर, विजन के अंदर हमारे जवान बहुत आगे हैं। सुनते हैं, देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, टूटते नहीं, हारते नहीं, आगे बढ़ते हैं, तब जाकर आप तक रसाई होती है एक कामयाब सहाफ़ी। वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है, मेहरिबा वो कौन है, क्या ऊंची शान है, अल्लाह अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाह अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाह अल्लाह, بربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 af eder günahı Allah Allah alemin padişahı Allah Allah yüreklerin enahı Allahu Allah. İşit Allah dertimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cellallah Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah, محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا رب العالمين صل على طه الأمين في كل وقت وحين املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي وللمؤمنين الله الله ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله الله. Thank you so much. Stars are born to shine for ages to come. Barriers, distances, challenges, they simply build up determination. We at Caltex are ready for yet another race. No matter how tough, no matter how far,
For years to come, you'll always see the Caltex star. Caltex. Chocolicious. My cookies crunchy or chocolatey. Chocolicious. So try chocolicious just like me. Chocolicious. देखो कितना crunchy है, full of yummy choco chips. C-H-O-C-O-licious. Chocolicious है delicious. देखो कितना crunchy है, full of yummy choco chips. C-H-O-C-O-licious. Chocolicious है delicious. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है। कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो कि और में कहा। प्रिंस लैंड और प्रिंस का दोस्त बेकर अब मेरे कब्जे में है। बच्चों, मुस्टैशियो ने मुझे भी ट्रैप कर लिया है और मुझे चाहिए तुम्हारी हेल्प ताकि मेरे क्राउन का ग्लो वापस आ जाए एंड वी कैन सेव प्रिंस लैंड। तो वेबसाइट पे रजिस्टर करो और प्रिंस एडवेंचर आर्मी का हिस्सा बनो। प्रिंस
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजीम कासर। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद। आज हम मौजूद हैं जुड़वा शहरों में और यहाँ पे जो है गोल्फ की एक बहुत बड़ी ग्राउंड नज़र आ रही है, जहाँ पर के बहुत से लोग जो हैं वो गोल्फ खेलने के लिए तशरीफ़ आए हैं। हमारे साथ कर्नल असद महमूद मौजूद है। कर्नल साहब, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जो है आर्मी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है हम सब स्पिरिचुअल टीवी को देखते रहते हैं। इट्स अ वंडरफुल चैनल। और ना सिर्फ ये कि मैं समझता हूँ कि आप न्यूज़ और करंट अफेयर को, बल्कि इस्लामिक सब्जेक्ट को भी मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा डील करते हैं। और आई वुड से कि ये बड़ा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान कैसे किस तरीके से चल रहा है, हमने पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है, फिर इस वक्त जो सिचुएशन इस पूरे रीजन के अंदर आती है, तो मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि स्पिरिचुअल टीवी इसको बहुत बेहतर तरीके से कंप्रीहेंड करके फिर इसको आगे कवर करके लेके चलेगा। उसी के साथ आपने क्योंकि गोल्फ़ का तज़किरा किया और साथ ही रावलपिंडी गोल्फ़ क्लब का भी, तो मैं ये कहूँगा कि सर्टनली दिस इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो कि अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पे मैसर है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। और मैं समझता हूँ कि आपका वो जो स्पिरिचुअल चैनल है ये आपका नहीं बल्कि हम सब का है, सब पाकिस्तानियों का है। इसको भी मैं कहूँगा कि स्पेशल अटेंशन ना सिर्फ ये कि आप गोल्फ़ को या और दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको दें, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो तमाम हमारे होनहार पाकिस्तानी जो कि दोज़ और आप कमिंग, आप उनके ऊपर फोकस करें और उनको आगे लेके आने की भी कोशिश करें। सर, मुल्क में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये हुकूमत को इसके ऊपर बड़ा फोकस करना होगा। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर और डिफरेंट किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर जाना होगा। आप चाहे मुख्तलिफ सेंटर्स बनाते हैं, कवर्ड होते हैं, या फिर प्ले ग्राउंड्स बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों पे मेरा ख्याल है हुकूमत को फोकस करना होगा। फिर स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, फिर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इन सब को हिस्सा डालना होगा। और फिर आपकी हुकूमतें आती हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है कि मेजर रोल प्ले करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, मेरे मुल्क के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये हमारा ठिकाना है, पाकिस्तान है, हम इसी की मिट्टी से निकले हैं, इसी मिट्टी के अंदर हमने जाना है। और जितना अरसा हम जिंदा हैं हमने पाकिस्तान के लिए जीना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। और हम हैं तो ये मुल्क है, ये मुल्क है तो हम हैं, हम सब एक मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर अपने यंगस्टर्स को कहूँगा, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट फॉर पाकिस्तानी यंगस्टर्स, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे बच्चियां हैं। आई वुड से कि दे आर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको बहुत आगे जाना है। एंड लेट मी टेल यू, इंटेलेक्ट के अंदर, जहानत के अंदर, विजडम के अंदर, विजन के अंदर हमारे जवान बहुत आगे हैं। सुनते हैं, देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, टूटते नहीं, हारते नहीं, आगे बढ़ते हैं, तब जाकर आप तक रसाई होती है एक कामयाब सहाफ़ी। खाना खा ले? बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजीम कासर और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद। आज हम मौजूद हैं जुड़वा शहरों में और यहाँ पे जो है गोल्फ़ की एक बहुत बड़ी ग्राउंड नज़र आ रही है जहाँ पर के बहुत से लोग जो हैं वो गोल्फ़ खेलने के लिए तशरीफ़ आए हैं। हमारे साथ कर्नल असद महमूद मौजूद है। कर्नल साहब, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जो है आर्मी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है हम सब स्पिरिचुअल टीवी को देखते रहते हैं। इट्स अ वंडरफुल चैनल। और ना सिर्फ ये कि मैं समझता हूँ कि आप न्यूज़ और करंट अफेयर को, बल्कि इस्लामिक सब्जेक्ट को भी मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा डील करते हैं। और आई वुड से कि ये बड़ा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान कैसे किस तरीके से चल रहा है, हमने पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है, फिर इस वक्त जो सिचुएशन इस पूरे रीजन के अंदर आती है, तो मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि स्पिरिचुअल टीवी इसको बहुत बेहतर तरीके से कंप्रीहेंड करके फिर इसको आगे कवर करके लेके चलेगा। उसी के साथ आपने क्योंकि गोल्फ़ का तज़किरा किया और साथ ही रावलपिंडी गोल्फ़ क्लब का भी, तो मैं ये कहूँगा कि सर्टली दिस इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो कि अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पर मैसर है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। और मैं समझता हूँ कि आपका वो जो स्पिरिचुअल चैनल है ये आपका नहीं बल्कि हम सब का है, सब पाकिस्तानियों का है। इसको भी मैं कहूँगा कि स्पेशल अटेंशन ना सिर्फ ये कि आप गोल्फ़ को या और दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको दें, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो तमाम हमारे होनहार पाकिस्तानी जो कि दो जोर आप कमिंग, आप उनके ऊपर फोकस करें और उनको आगे लेके आने की भी कोशिश करें। सर, मुल्क में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये हुकूमत को इसके ऊपर बड़ा फोकस करना होगा। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर और डिफरेंट किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर जाना होगा। आप चाहे मुख्तलिफ सेंटर्स बनाते हैं, कवर्ड होते हैं, या फिर प्ले ग्राउंड्स बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों पे मेरा ख्याल है हुकूमत को फोकस करना होगा। फिर स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, फिर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इन सब को हिस्सा डालना होगा। और फिर आपकी हुकूमतें आती हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है कि मेजर रोल प्ले करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, मेरे मुल्क के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये हमारा ठिकाना है, पाकिस्तान है, हम इसी की मिट्टी से निकले हैं, इसी मिट्टी के अंदर हमने जाना है। और जितना अरसा हम जिंदा हैं हमने पाकिस्तान के लिए जीना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। और हम हैं तो ये मुल्क है, ये मुल्क है तो हम हैं, हम सब एक मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर अपने यंगस्टर्स को कहूँगा, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट फॉर पाकिस्तानी यंगस्टर्स, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे बच्चियां हैं। आई वुड से कि दे आर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको बहुत आगे जाना है। एंड लेट मी टेल यू, इंटेलेक्ट के अंदर, जहानत के अंदर, विजडम के अंदर, विजन के अंदर हमारे जवान बहुत आगे हैं। सुनते हैं, देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, टूटते नहीं, हारते नहीं, आगे बढ़ते हैं, तब जाकर आप तक रसाई होती है एक कामयाब सहाफ़ी। हम सब ने ये जरूर सुना होगा,
It's like Chocolicious. देखो कितना क्रंची है, full of yummy choco chips. C-H-O-C-O-licious. Chocolicious है delicious. देखो कितना क्रंची है, full of yummy choco chips. C-H-O-C-O-licious. Chocolicious है delicious. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है। कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। प्रिंस लैंड और प्रिंस का दोस्त बेकर अब मेरे कब्जे में है। बच्चों, मुस्टैशियो ने मुझे भी ट्रैप कर लिया है और मुझे चाहिए तुम्हारी हेल्प ताकि मेरे ग्राउंड का ग्लो वापस आ जाए एंड वी कैन सेव प्रिंस लैंड। तो वेबसाइट पे रजिस्टर करो और प्रिंस एडवेंचर आर्मी का हिस्सा बनो। प्रिंस फिर से ख्वाब टूट गया। ये भी फिर टूट गया। अभी तो नया लगाया था ना। कभी तो गुड डिसीजन ले लिया करो। सैनिटरी फिटिंग्स का बैड डिसीजन और आपस की टेंशन से बचो। सिर्फ मास्टर सैनिटरी फिटिंग्स ही लगवाओ। वाओ, कितना खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह, ये टूटेगा नहीं। अच्छा, तो फिर पूरे घर में मास्टर सैनिटरी ही लगवा कर दो। इतना खर्चा? खर्चा नहीं, सस्ता। मास्टर की सिल्वर सीरीज, जबरदस्त डिजाइन्स और मास्टर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेहतरीन क्वालिटी जो हर एक के बजट में फिट आए। अब तो खुश होना मेरे गुड डिसीजन से। पूरे घर में मास्टर सैनिटरी ही लग गया है। ओह हेलो, ये मेरा गुड डिसीजन था। ओह सुनो, अब तुम्हारा ख्वाब नहीं टूटेगा। मास्टर सैनिटरी, गुड डिसीजन। डार्लिंग, ये है ब्यूटीफुल एरिजोना सनराइज ऑरेंज। इसकी माइलेज क्या है? माइलेज ये कितनी दूर जाएगा, कितनी ईदें दिखाएगा, कितनी चांद रातें, कितनी बरसातें, कब होगा सनराइज ऑरेंज का सनसेट। ये है किफायती ड्यूलक्स प्रॉमिस। आम पेंट के मुकाबले इसमें है क्रोमा ब्राइट टेक्नोलॉजी जो रखे आपकी दीवारें साल हर साल ब्राइट। क्यों डार्लिंग, माइलेज मिली ना? काश जिंदगी में हर चीज की इतनी ही माइलेज होती। ये है ड्यूलक्स का प्रॉमिस, माइलेज वाला पेंट। उस्ताद जी, गाड़ी चल नहीं रही है, धक्के से स्टार्ट होती है। ये लगाइए। कह रहा था ये तो बेहतरीन है। पता है हमारी गाड़ी क्यों नहीं चलती? इसलिए कि हम हर सौदा आसानी से खरीद लेते हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। वो देखो, खरीद ले सौदा खरीद ले सौदा खरीद ले, मंजन खरीद ले, सज्जन खरीद ले, बोतल बदल कर ढक्कन खरीद ले, चूरन खरीद ले, फौरन खरीद ले, हिकमत को फेंक दे, किस्मत खरीद ले। ले जवानी, सुन ले कहानी, कचरा भी खरीद ले, बेचे जो रानी। अकल को बेच कर नकल खरीद ले, सौदा खरीद। जिस दिन से हम सिर्फ एक नंबर चीज खरीदना शुरू हो जाएंगे, उस दिन से हमारी गाड़ी सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। हर बात पे इस तरह सर न हिलाओ। आला क्वालिटी की ओसाका बैटरी लगाओ और बेफिक्र गाड़ी चलाओ।
It's fast, throbbing with energy. Define your style. Get on the road to your success. The world awaits to cheer you. Suzuki Cultus. New beginning, different attitude. लोगों से सनब्लॉक ना इस्तेमाल करने का पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। एक हाउसवाइफ को सनब्लॉक की क्या जरूरत? आदमी कहाँ यूज करते हैं सनब्लॉक? बच्चे तो सनब्लॉक नहीं लगाते। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी ब्यूटी क्रीम ही काफी है। आइए मैं आपको यूवी लाइट में आपकी स्किन दिखाती हूँ। मैं तो अपनी ब्यूटी क्रीम से काफी मुतमईन थी। इस तरह के केसेस में मैं रेकमेंड करती हूँ सिर्फ रिवाज सनब्लॉक। रिवाज सनब्लॉक क्रीम धूप से बचाए और स्किन को रखे सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इसका रैपिड एक्शन फॉर्मूला सन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स से दे निजात ताकि आप दिखें कुछ खास। रिवाज सनब्लॉक, एम्ब्रेस द सन। हर दिन हर बार। Stars are born to shine for ages to come. Barriers, distances, challenges, they simply build up determination. We at Caltex are ready for yet another race. No matter how tough, no matter how far, for years to come, you'll always see the Caltex star. Caltex. Chocolicious. My cookies crunchy or chocolatey. Chocolicious. So try chocolicious just like me. Chocolicious. देखो कितना crunchy है, full of yummy choco chips. CHOCOlicious. Chocolicious है delicious. देखो कितना crunchy है, full of yummy choco chips. CHOCOlicious. Chocolicious है delicious. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है। कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। प्रिंस लैंड और प्रिंस का दोस्त बेकर अब मेरे कब्जे में है। बच्चों, मुस्टैचियो ने मुझे भी ट्रैप कर लिया है और मुझे चाहिए तुम्हारी हेल्प ताकि मेरे ग्राउंड का ग्लो वापस आ जाए एंड वी कैन सेव प्रिंस लैंड। तो वेबसाइट पे रजिस्टर करो और प्रिंस एडवेंचर आर्मी का हिस्सा बनो। प्रिंस आउट।
फिर से ख्वाब टूट गया। ये भी फिर टूट गया। अभी तो नया लगाया था ना। कभी तो गुड डिसीजन ले लिया करो। सैनिटरी फिटिंग्स का बैड डिसीजन और आपस की टेंशन से बचो। सिर्फ मास्टर सैनिटरी फिटिंग्स ही लगवाओ। वाओ, कितना खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये टूटेगा नहीं। अच्छा, तो फिर पूरे घर में मास्टर सैनिटरी ही लगवा कर दो। इतना खर्चा? खर्चा नहीं, सस्ता। मास्टर की सिल्वर सीरीज, जबरदस्त डिजाइन्स और मास्टर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेहतरीन क्वालिटी जो हर एक के बजट में फिट आए। अब तो खुश होना मेरे गुड डिसीजन से। पूरे घर में मास्टर सैनिटरी ही लग गया है। ओह हेलो, ये मेरा गुड डिसीजन था। सुनो, अब तुम्हारा ख्वाब नहीं टूटेगा। मास्टर सैनिटरी, गुड डिसीजन। डार्लिंग, ये है ब्यूटीफुल एरिजोना सनराइज ऑरेंज। इसकी माइलेज क्या है? माइलेज ये कितनी दूर जाएगा, कितनी देर दिखाएगा, कितनी चांद रातें, कितनी बरसातें, कब होगा सनराइज ऑरेंज का सनसेट। ये है किफायती ड्यूलक्स प्रॉमिस। आम पेंट के मुकाबले इसमें है क्रोमा ब्राइट टेक्नोलॉजी जो रखे आपकी दीवारें साल हर साल ब्राइट। क्यों डार्लिंग, माइलेज मिली ना? काश जिंदगी में हर चीज की इतनी ही माइलेज होती। ये है ड्यूलक्स का प्रॉमिस, माइलेज वाला पेंट। उस्ताद जी, गाड़ी चल नहीं रही है, धक्के से स्टार्ट होती है। ये लगाइए। कह रहा था ये तो बेहतरीन है। पता है हमारी गाड़ी क्यों नहीं चलती? इसलिए कि हम हर सौदा आसानी से खरीद लेते हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। वो देखो, खरीद ले सौदा खरीद ले सौदा खरीद ले, मंजन खरीद ले, सज्जन खरीद ले, बोतल बदल कर ढक्कन खरीद ले, चूरन खरीद ले, फौरन खरीद ले, हिकमत को फेंक दे, किस्मत खरीद ले। ले जवानी, सुन ले कहानी, कचरा भी खरीद ले, बेचे जो रानी। अक्ल को बेच कर नकल खरीद ले, सौदा खरीद। जिस दिन से हम सिर्फ एक नंबर चीज खरीदना शुरू हो जाएंगे, उस दिन से हमारी गाड़ी सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। हर बात पे इस तरह सर न हिलाओ। आला क्वालिटी की ओसाका बैटरी लगाओ और बेफिक्र गाड़ी चलाओ। It's fast, throbbing with energy. Define your style. Get on the road to your success. The world awaits to cheer you. Suzuki Cultus. New beginning, different attitude.
लोगों से सनब्लॉक ना इस्तेमाल करने का पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। एक हाउसवाइफ को सनब्लॉक की क्या जरूरत? आदमी कहाँ यूज करते हैं सनब्लॉक? बच्चे तो सनब्लॉक नहीं लगाते। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी ब्यूटी क्रीम ही काफी है। स्किन दिखाती हूँ। मैं तो अपनी ब्यूटी क्रीम से काफी मुतमईन थी। इस तरह के केसेस में मैं रेकमेंड करती हूँ सिर्फ रिवाज सनब्लॉक। रिवाज सनब्लॉक क्रीम धूप से बचाए और स्किन को रखे सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इसका रैपिड एक्शन फॉर्मूला सन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स और रिंकल से दे निजात, ताकि आप दिखें कुछ खास। रिवाज सनब्लॉक, एम्ब्रेस द सन। हर दिन, हर बार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजीम कासर। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद। आज हम मौजूद हैं जुड़वा शहरों में और यहाँ पे जो है गोल्फ़ की एक बहुत बड़ी ग्राउंड नज़र आ रही है, जहाँ पर के बहुत से लोग जो हैं वो गोल्फ़ खेलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ कर्नल असद महमूद मौजूद है। कर्नल साहब, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जो है आर्मी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है हम सब स्पिरिचुअल टीवी को देखते रहते हैं। इट्स अ वंडरफुल चैनल। और ना सिर्फ ये कि मैं समझता हूँ कि आप न्यूज़ और करंट अफेयर को, बल्कि इस्लामिक सब्जेक्ट को भी मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा डील करते हैं। और आई वुड से कि ये बड़ा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज़ पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान कैसे किस तरीके से चल रहा है, हमने पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है, फिर इस वक्त जो सिचुएशन इस पूरे रीजन के अंदर आती है, तो मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि स्पिरिचुअल टीवी इसको बहुत बेहतर तरीके से कंप्रीहेंड करके फिर उसको आगे कवर करके लेके चलेगा। उसी के साथ आपने क्योंकि गोल्फ़ का तज़किरा किया और साथ ही रावलपिंडी गोल्फ़ क्लब का भी, तो मैं ये कहूँगा कि सर्टली दिस इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो कि अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पे मैसर है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। और मैं समझता हूँ कि आपका वो जो स्पिरिचुअल चैनल है, ये आपका नहीं बल्कि हम सब का है, सब पाकिस्तानियों का है। इसको भी मैं कहूँगा कि स्पेशल अटेंशन ना सिर्फ ये कि आप गोल्फ़ को या और दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको दें, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो तमाम हमारे होनहार पाकिस्तानी जो कि दोज़ और आप कमिंग, आप उनके ऊपर फोकस करें और उनको आगे लेके आने की भी कोशिश करें। सर, मुल्क में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये हुकूमत को इसके ऊपर बड़ा फोकस करना होगा। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर और डिफरेंट किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर जाना होगा। आप चाहे मुख्तलिफ सेंटर्स बनाते हैं, कवर्ड होते हैं, या फिर प्ले ग्राउंड्स बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों पे मेरा ख्याल है हुकूमत को फोकस करना होगा। फिर स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, फिर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इन सब को हिस्सा डालना होगा। और फिर आपकी हुकूमतें आती हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है कि मेजर रोल प्ले करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, मेरे मुल्क के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये हमारा ठिकाना है, पाकिस्तान है, हम इसी की मिट्टी से निकले हैं, इसी मिट्टी के अंदर हमने जाना है। और जितना अरसा हम जिंदा हैं हमने पाकिस्तान के लिए जीना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। और हम हैं तो ये मुल्क है, ये मुल्क है तो हम हैं, हम सब एक मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर अपने यंगस्टर्स को कहूँगा, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट फॉर पाकिस्तानी यंगस्टर्स, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे बच्चियां हैं। आई वुड से कि दे आर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको बहुत आगे जाना है। एंड लेट मी टेल यू, इंटेलेक्ट के अंदर, जहानत के अंदर, विजडम के अंदर, विजन के अंदर हमारे जवान बहुत आगे हैं।
सुनते हैं, देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, टूटते नहीं, हारते नहीं, आगे बढ़ते हैं, तब जाकर आप तक रसाई होती है एक कामयाब सहाफ़ी। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है बातें बनाना।
सबके वाली सारे नबी तेरे दर के सवाले शाहे मदीना